हे गाइस, दिस कोच निक एंड आज हम करने वाले हैं अपर बॉडी 10 मिनट्स ऑफ अपर बॉडी वर्कआउट। ज़्यादा इंटेंस करने के लिए आप लोग इसको डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। 10 मिनट के वर्कआउट को आप 20 मिनट 30 मिनट तक कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं 40 सेकेंड्स ऑन एंड 20 सेकेंड्स ऑफ। हम 40 सेकेंड्स वर्कआउट करेंगे एंड 20 सेकेंड रेस्ट करेंगे और प्लस रेस्ट पीरियड में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड आई गेस आपने वार्म अप कर लिया होगा, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग इन 7 5 एंड स्टार्ट करेंगे हम ट्राइसेप डिप्स के साथ। ट्राइसेप डिप्स किसी भी सोफे या चेयर पे रखेंगे हाथ और नीचे की तरफ स्लो एंड इजी नीचे तक जाएंगे और फिर ऊपर। अगर किसी को टफ पड़ रहा हो ये तो पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ कर सकता है, थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये अगर किसी को बाहर नहीं पड़ रहा, इजी बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो पैर बाहर कर सकता है। वेरी गुड, कीप ऑन गोइंग गाइस, कीप ऑन गोइंग। Three, 2, 1 and done. Rest. Second exercise is plank and reach. Plank position के अंदर आके plank position के अंदर high plank and reach. Plank position के अंदर आके reach. और हम स्टार्ट करेंगे 3. Let's go. High plank and reach. कोशिश करेंगे हम कमर कम से कम हिलाएं, जितना ज़्यादा कम हिलाएंगे हम उतना ज़्यादा कोर पे पड़ेगा, तो शोल्डर पे अच्छा पड़ेगा। 20 सेकेंड्स और। Five, 1 and done. Rest. Next exercise is bird dog. Bird dog के अंदर क्या करेंगे हम? टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आएंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर के नीचे हैंड्स, हिप बोन के नीचे नीज, एक हाथ और एक पैर ऊपर एंड विल चेंज। मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ एंड चेंज। 1 सेकेंड का होल्ड करेंगे एंड देन चेंज करेंगे। एक सेकेंड का होल्ड एंड देन चेंज। कीप ऑन ब्रीथिंग। Two and down. Rest. Next is chair press. चेयर के ऊपर या फिर सोफे के ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं, लाइक हाथ अच्छे से रखा और जैसे पुशअप करते हैं वैसे ही करेंगे। And let's go. Keep on going, everyone. Keep on going, guys. 20 seconds और. Ten seconds और हैं. 5 seconds और. 3, 2, 1. And rest. Next is alternate plank. High plank से low plank, low plank से high plank. High plank position से low plank में जाएंगे और low plank से high plank में जाएंगे। 1 and let's go. High plank से low plank, low plank से high plank. Very good. Core
शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स सबके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा एक और हैंड रेस्ट। हमने 5 एक्सरसाइज करी, अब इन्हीं 5 को हम रिपीट करने वाले हैं एक बार और। एंड we'll start with tricep dips. Tricep dips. ऊपर स्लोली नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे। Ten seconds और 2 more, 1 more, कम होने को लगेगा। 1 and next is high plank and reach. hands में burning feel हो रही होगी। 5 3 2 1 high plank and reach. वेरी गुड। कोशिश करेंगे कमर कम से कम मिलाएं। And then rest. Very good, guys. 3 more exercises or next is bird dog. Three, 2 1 alternate legs and hand. Legs and hand. And make sure बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बस 10 seconds और। Keep on going, guys. 2 and 1 more. Very good. Last 2 exercises, chair press and alternate plank. Sweat. Back. 2. Chair press. चेयर से जब दूर आएंगे तब एक्सहेल करेंगे, पास आएंगे तो इनहेल करेंगे। Keep on going. Five seconds or 2 rest. Last exercise of the day, and that is alternate plank. Low plank and then high plank. Low plank and then high plank. 2 Let's go. Plank to low plank, low plank to high plank.
high plank to low plank, low plank to high plank. Very good, guys. One more. Rest. And we are done for the day. So amazing session it was. थोड़ा इंटेंस और करने के लिए आप टाइम कम कर सकते हैं, रेस्टिंग टाइम कम और वर्किंग टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस इसको रिपीट भी कर सकते हैं 2 to 3 टाइम्स. सो कल मिलते हैं गाइस एक नए वर्कआउट के साथ. तब तक बाय बाय.